Welcome everyone in lecture number 21 of statistics. In last lectures till now we have done estimation for population mean, population proportion, population variance, and we have also estimated sample size. Now the next one is estimating the difference between two population means. What is the need of estimation of difference between two population means? मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए जो एक तरह का बल्ब प्रोड्यूस करती है और कंपनी बी है जो दूसरे टाइप का बल्ब प्रोड्यूस करती है। कंपनी ए क्लेम करती है कि उनके बल्ब जो प्रोड्यूस होते हैं वो उनकी लाइफ ज्यादा है कंपनी बी के बल्ब से, या कंपनी ए मान लीजिए ये कहती है कि हमारे बल्ब 2000 आवर्स जलते हैं और कंपनी बी ये कहती है कि उनके बल्ब्स 3000 या 3000 आवर्स चलते हैं। तो अब हमें इस क्लेम को चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उन बल्ब की एवरेज लाइफ का जो डिफरेंस है वो हम देखें कि किस इंटरवल में लाई करता है। अगर वो डिफरेंस की लोअर लिमिट और अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है तो मतलब वाकई में इन दोनों की लाइफ में डिफरेंस हो सकता है। अगर उन डिफरेंस जिस इंटरवल में लाई कर रहा है वो डिफरेंस अगर उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ज़्यादा अंतर नहीं है तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस दोनों की लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्लेम को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉपुलेशन 1 है और एक पॉपुलेशन 2 है। पॉपुलेशन 1 का मीन μ1 है और पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है। इसी तरह पॉपुलेशन 2 के लिए मीन μ2 है, वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब आपने पॉपुलेशन 1 से सैंपल्स लिए, कुछ मान लीजिए सैंपल 1 लिया जिसका मीन x1 बार है और पॉपुलेशन 2 से जो सैंपल लिया उसका मीन x2 बार है। तो इन जो पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है उसके लिए पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, इन सैंपल मीन्स का डिफरेंस। ओके, अब मान लीजिए अगर हम इधर से कई सारे सैंपल्स लें एक ही पॉपुलेशन से और यहाँ से भी कई सारे सैंपल्स लें तो हम एक पॉपुलेशन के सैंपल्स का दूसरे पॉपुलेशन के सैंपल्स से डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब एक सैंपल का डिफरेंस आप यहाँ के सारे सैंपल से निकालिए, फिर सेकंड सैंपल का डिफरेंस यहाँ के सारे सैंपल से निकालिए। इस तरह से यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स और फिर हम उस डिफरेंस को हम प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस पर, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स को। यानी एक्स एक्सिस पे हम डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स लेंगे और वाई एक्सिस पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो आप जब इसकी शेप देखेंगे तो उसकी शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मिलेगी अगर सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा है। दिस इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज। तो if we apply the central limit theorem on the difference between sample means, the distribution of sample means, distribution means shape of the distribution of sample means, जो कैसे ड्रॉ होगा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको एक्स एक्सिस पर सैंपल मीन्स का डिफरेंस लेना है और वाई एक्सिस पर उनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो व्हेन यू सी the shape of the curve, it would approaches to normal distribution as the sample size increases. Means sample size at least 30 के लिए तो shape आपको exactly normal ही मिलेगी 30 या उससे ज्यादा के लिए, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहती है कि फॉर लार्ज सैंपल साइजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी टेकन एज या कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा
and the mean of such distribution, that is mean mu x1 bar minus x2 bar, this indicates the mean of difference between sample means is equal to difference between their population means. And standard deviation is square root sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2, where sigma 1 square is the variance of first population, and sigma 2 square is the variance of second population. N1 is sample size, which is taken from the first population. N2 is the sample size, which is taken from the second population. So this is what is the information about the normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो ही चीजें आपको चाहिए, एक मीन और उसका वेरिएंस. तो मीन क्या है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है μ1 माइनस μ2, और स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, so that the value of z will be. Now here the variables on the x-axis are the difference between sample means. So here it is x1 bar minus x2 bar minus the mean of this sample means, which is equal to mu1 minus mu2. मीन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, इनका मीन क्या है? mu1 माइनस mu2, अभी यहाँ पे लिखा है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. ये वही फॉर्मूला है जो सबसे पहले हमने किया था, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन, वो सिंगल सैंपल मीन के लिए था. यहाँ पर अब आपके पास दो सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके डिफरेंस का सैंपल मीन्स के डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स है, फिर उस डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स का मीन है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स. And these two samples which we have drawn from the population, these two are independent samples. Okay. And the variance of the population is known. So 100 into 1 minus alpha % confidence interval for the difference between population mean is given by x1 bar minus x2 bar minus z alpha by 2 square root sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2, and x1 bar minus x2 bar plus z alpha by 2 square root sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. This is the lower limit of the interval and this is the upper limit of the interval. Remember, you can use this formula only in the case when population variance is known and sample size is at least 30 or greater than 30, because we are using here Z statistics. If the sample size is less than 30 but the population is normally distributed and population variance is known, then you can use this formula in that case also. For example, a study was conducted in which two types of engines, A and B, were compared. Gas mileage in miles per gallon were measured. 50 experiments were conducted using engine type A and 75 experiments were conducted with engine type B. The gasoline used and the other conditions were held constant. The average gas mileage was 36 miles per gallon for engine A and 42 miles per gallon for engine B. Find a 96% confidence interval on mu B minus mu A, where mu A and mu B are the population mean gas mileage for engine A and B respectively. Assume that the population standard deviations are 6 and 8 for engine A and B respectively. दो तरह के इंजन्स पर स्टडी की गई है और गैस माइलेज इन माइल्स पर गैलन मेजर किया गया है. टाइप ए के लिए 50 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं, 75 एक्सपेरिमेंट टाइप बी के लिए किए गए.
और मतलब एक तरह से जो टाइप ए के इंजन के आपने 50 एक्सपेरिमेंट्स किए, टाइप बी के इंजन के लिए 75 एक्सपेरिमेंट किए। एवरेज जो नोट किया गया 50 एक्सपेरिमेंट्स का वो 36 माइल्स पर गैलन था फॉर इंजन ए और 42 माइल्स पर गैलन था फॉर इंजन बी। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें फाइंड करना है फॉर द डिफरेंस ऑफ म्यू बी माइनस म्यू ए, यानी पॉपुलेशन मीन्स फॉर इंजन type B and for engine type A. Population standard deviations are known. They are given as 6 and 8 for engine A and B. So point estimate of mu B minus mu A is XB minus XA, where XB bar is sample mean for engine type B and XA bar is sample mean for type engine A. So this difference is 6. This is already given here. 36 एवरेज नोट किया गया है टाइप ए के लिए, 42 माइल्स एवरेज नोट किया गया है इंजन बी के लिए। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अल्फा की वैल्यू 0.04 आती है, सो दैट अल्फा बाय 2 इज 0.02 and z 0.02 is 2.05. So we substitute all the values in the formula. This formula x1 bar minus x2 bar. So this is 6 here minus 2.05 z alpha by 2. Sigma 1 square is 64 for engine type A. Sorry, 36 for type A and 64 for type B. टाइप ए के 50 एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो 36 के अपॉन में 50 है और 64 के अपॉन में 75 है। म्यू बी माइनस म्यू ए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो एक्स बी माइनस ए है, इसलिए ये इंटरवल म्यू बी माइनस म्यू ए के लिए आएगा। सो द आंसर इज 3.43 टू 8.57। ये डिफरेंस है पॉपुलेशन मीन में, इस रेंज में। इसमें इस क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नोन थी, ओके, लेकिन जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं है बट इक्वल है, यानी दोनों पॉपुलेशन जिनसे सैंपल लिए गए हैं उनकी वेरिएंस इक्वल है लेकिन नोन नहीं है, तो if x1 bar and x2 bar are means of independent random samples of size n1 and n2 from approximately normal population with unknown but equal variances, जब भी पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होती है, चाहे आप सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के लिए एस्टिमेट करें कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस केस में भी जब वेरिएंस नोन नहीं थी या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं था, उस केस में हमने टी स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था। आपको अगर याद हो तो जब भी हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं होती है, हम टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो if x1 bar and x2 bar are means of independent random samples of size n1 and n2, ये दो रैंडम सैंपल्स की मीन है जिनका साइज n1 एंड n2 है और ये दोनों नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनकी वेरिएंस अननोन है लेकिन इक्वल है, तो उस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स इज गिवन बाय x1 bar minus x2 bar minus t alpha by 2 into sp square root of 1 upon n1 plus 1 upon n2 less than mu1 minus mu2 less than x1 bar minus x2 bar plus t alpha by 2 sp square root 1 upon n1 plus 1 upon n2। अब क्योंकि दोनों पॉपुलेशन की वेरिएंसेस इक्वल हैं, तो हम पूल्ड एस्टीमेट निकालते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस का। SP is the pooled estimate of population standard deviation and T alpha by 2 is the T value with
डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर दो सैंपल्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकालेंगे हम. And alpha by 2 is the area of upper tail in T distribution. So pooled estimate of population standard deviation. This formula is given in this question. So let's discuss this question. Two independent sampling stations were chosen for this study. One located downstream from the acid mine discharge point and the other located upstream. For 12 monthly samples collected at the downstream station, the species diversity index had a mean value 3.11 and standard deviation 0.771. While 10 monthly samples collected at upstream station had a mean index value 2.04 and standard deviation 0.448. Find 90% confidence interval for difference between population means for two stations, assuming that the populations are approximately normally distributed with equal variances. In this question, we have two samples, and for one sample is collected at downstream station for 12 months, up to 12 months, and it is noted that the average value is 3.11 and standard deviation is 0.771. And 10 monthly samples were collected at upstream station with average value 2.04 and standard deviation 0.448. We have to construct a 90% confidence interval for the difference between population means for two stations, assuming that the populations are normally distributed with equal variances. So here the population variance is not known, but it is known that the population has equal variance. So let's collect the information. Mu1, mu2 represent population means, and so confidence point estimate for mu1 minus mu2 is the difference between the sample means, which is 3.11 minus 2.04. Always we subtract a lower value from the higher value. Okay. Pooled estimate, the formula for SP square is n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2. This is a pooled estimate of common variance because it is given that the population has same variance. So we find the pooled estimate of common variance. So the value is of SP square is 0.417. Then we take the square root of this value so that SP is 0.646. And we find the value of T 0.05 because alpha is 0.1 for 90% confidence interval with degree of freedom equal to 20. So we look for 20 degree of freedom and area in the upper tail as 0.05. So the value of T is 1.725. So 90% confidence interval for the difference between population means is, this is the difference between sample means x1 bar minus x2 bar minus T alpha by 2 into SP into 1 upon n1 plus 1 upon n2. So the answer is 0.593 and upper limit is 1.547. You can try these problems at your own. The first problem is two kinds of thread are being compared for strength. First piece, 50 pieces of each type of thread were tested under similar conditions. Brand A has an average tensile strength of 78.3 kilograms with a standard deviation of 5.6 kilograms, while brand B has an average tensile strength of 87.2 kilograms with a standard deviation of 6.3 kilograms. Construct a 95% confidence interval for the difference of population means. दो तरह के थ्रेड हैं जिनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो दोनों तरह के 50-50 थ्रेड लिए गए हैं और उनकी जो
एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक की गई है ब्रांड ए के लिए, मतलब ये 78.3 किलोग्राम्स तक ऑन एन एवरेज 78.3 किलोग्राम्स तक वजन बियर कर सकता है थ्रेड ए जो है, ब्रांड ए का थ्रेड, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6, while brand B has average tensile strength of 87.2 kilograms with a standard deviation of 6.3 kilograms. अब आपको इसमें पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें ये जो गिवन है इंफॉर्मेशन, ये एवरेज है सैंपल ए के लिए, सैंपल मीन है ये ब्रांड ए के थ्रेड के लिए। दिस इज द सैंपल मीन फॉर this is sample mean for brand B type of thread, and 5.6 is the population standard deviation for brand A, and 6.3 is population standard deviation for brand B. So you can construct 95% confidence interval. Similarly, problem number 2, a random sample of size n1 is equal to 25 taken from normal population with the standard deviation is equal to 5 has mean is equal to 80. A second random sample of size n2 is equal to 36 taken from different normal population with standard deviation 3 has mean 75. This should be x2 bar. Find 94% confidence interval for mu1 minus mu2. So this is a sample size n1, standard deviation sigma 1 is 5 and x1 bar is 80. So everything is given to you, just apply the formula. In both the examples, in both practice problems, Z statistics will be used. Because although sample size is small here, but it is given that they are taken from normal population with known standard deviation. Okay. And this answer is 2.9 to 7.1. Practice problem number 3. A study was conducted to determine if a certain treatment has any effect on the amount of metal removed in pickling operation. A random sample of 100 pieces were immersed in a bath for 24 hours without the treatment, yielding an average of 12.2 millimeters of metal removed and a sample standard deviation of 1.1 millimeter. A second sample of 200 pieces were exposed to the treatment followed by 24 hours immersion in the bath, resulting in an average removal of 9.1 millimeters of metal with sample standard deviation of 0.9 millimeters. Compute 98% confidence interval estimate for the difference between the population means. Thus, the treatment appears to reduce the mean amount of metal removed. As per the question given here, we are looking whether treatment has some effect on the metal removal. Here, a metal is 100 pieces of some metal were immersed in a bath for 24 hours and without treatment, yielding an average of 12.2 millimeters of metal removed and a sample standard deviation of 1.1 millimeters. मतलब बिना treatment के ये देखा गया कि on an average 12.2 millimeter metal remove हो जाती है अगर हम किसी 100 pieces को किसी सॉल्यूशन में को बात करते हैं, मतलब भिगो उसको इमर्स करके रख रहे हैं 24 आवर्स के लिए विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो इतनी मेटल रिमूव हो जाती है ऑन एन एवरेज with a sample standard deviation. This is sample standard deviation means S1 here, and this is X1 bar.
इसी तरह 200 पीस लिए गए दूसरी सैंपल में से, और सेकंड सैंपल लिया गया 200 पीसेस का, और उनको ट्रीटमेंट देकर इमर्स किया गया बाद में 24 आवर्स के लिए, और उससे एवरेज 9.1 मिलीमीटर मेटल रिमूव हुई, मतलब मेटल कम रिमूव हुई है ऐसा लग रहा है आफ्टर द ट्रीटमेंट, विद सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9। अब हमें 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स, और ये भी बताना है कि ट्रीटमेंट से कुछ मीन अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव में कुछ रिडक्शन हुआ है या नहीं। तो इसका आंसर आएगा 2.80 से लेकर 3.40, मतलब जो डिफरेंस है पॉपुलेशन मीन में वो 2.80 से 3.40 के बीच में है, मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि म्यू2 की वैल्यू कम है म्यू1 से, और म्यू2 का मतलब है कि द पॉपुलेशन विद ट्रीटमेंट, एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन विद ट्रीटमेंट। तो आंसर से तो यही लग रहा है कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है इन रिडक्शन ऑफ मेटल रिमूवल। ओके, so you can try these problems at your own, and remember here in this question because we are given the sample standard deviations means S1 and S2, so we have to find here uh, pooled estimate of population variance. Although in this question it is not given that the population is normally distributed, or they have same variance, so you have to take these two assumptions while the solution. Okay, so you have to take an assumption here that assuming that population variances are equal, so we find the pooled estimate of common population variance. उससे करिएगा इसको, ये assumption लेकर। Okay, thank you very much.